নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দেখৰ ওয়াকফ বোৰ্ডক লৈ লোকসভাত নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে উত্থাপন কৰিলে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত উত্থাপন কৰা হৈছে নতুন ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক 2024 ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক 2024ক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ দেখৰ ওয়াকফ বোৰ্ডসমূহক এই আইনে অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমি আগবঢ়াইছো সংসদৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा और हमसे पहले भी कितने लोग मिले और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहरास कम्युनिटी का संख्या कम है इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या सर अहमदिया ये कम संख्या है इसलिए क्या उनका सोच उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे सर आगा कहानी संख्या कम है क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में सर जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है ये बहुत लोग कह रहे हैं आज सदन में नहीं कह रहे हैं सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है नाम मत बताना नाम तो हम बताएंगे नहीं सर मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इश्यूर में खराब नहीं कर दूंगा कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगा मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर सबसे पहले बस हो गया सर कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर ऑफिशियल लेवल में पॉलिटिकल लेवल में स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर मुझे इस मंत्रालय में आए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रालय के सब लोगों ने बहुत बारीकी से समस्याओं का भी पहचान किया और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत ब्रॉड बेस किया है सर कुछ कंसल्टेशन के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं सर 2015 के बाद एक्टिव कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है ऐसा मत सोचिए ये 2024 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के अचानक आया मत सोचिए ये मैं आपको बताने वाला कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज ये बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं सर इसमें सर अलग अलग समुदाय के जितना मैंने नाम लिया सर अहमदियास है बोहरास पसमंदास आगा खानीज वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने पिछड़े मुसलमानों के अंदर में सबसे लेकर के 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सीईओ और उनके और भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सबसे बात शुरू किया है सर 2015 में पटना में कंसल्टेशन प्रोसेस किया फिर उसके बाद में 16 अप्रैल में नई दिल्ली में फिर 12 तारीख अक्टूबर 2015 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका कंसल्टेशन का बैठक हुआ उसके बाद 2015 में 11 नवंबर का दिल्ली में फिर उसके बाद 7 जनवरी 2017 में फिर दिल्ली में 8 मार्च 2018 दिल्ली में इस तरीके से फिर 13 जुलाई 2023 में मुंबई में
उसके बाद 2024 जुलाई 23 में फिर लखनऊ में, उसके बाद फिर 7 नवंबर 2023 नई दिल्ली में सर। और ये जो प्रोसेस है लखनऊ यूपी में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है अखिलेश जी। लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है सर। आप मुख्यमंत्री रहे हैं वहां सर। सर 2023 जो लेटेस्ट कंसल्टेशन जो हुए हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसमें सर जनरल पब्लिक जो आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुई, क्योंकि हमारा मंत्रालय ने खुले मन से कहा कि इंडिविजुअल लेवल में भी आपका कोई इश्यू है, आप आ सकते हैं, आप बात रख सकते हैं, मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ आप मिल सकते हैं। उस समय सर मुंबई में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द जनरल पब्लिक के साथ साथ और भी ऑफिशियल से भी हमारी बैठक हुई और उसमें स्टेट वक्फ बोर्ड को इंप्रूव करने के लिए और कदम क्या क्या उठाना चाहिए उसका सुझाव वहां में आया। लखनऊ में जब बैठक हुई, लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के जो बाकी टॉप लेवल से भी सबसे बात हुई, चेयरमैन, सीईओ और आम लोगों से भी वहां सुनवाई हुई और वो भी बहुत एक्सटेंसिवली वहां बात हुई। और वहां ये वामसी पोर्टल, आपके जो इंफॉर्मेशन वगैरह जितना हम शेयर करते हैं, ये सब के बारे में, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कैसे मेंटेनेंस होना चाहिए, सारा चर्चा हुए। रिकमेंडेशन दिए कि ये अमेंडमेंट का जरूरत है। आपके लखनऊ से भी रिकमेंडेशन आया है। उसके बाद सर दिल्ली में मंत्री जी का अध्यक्षता में जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरपर्सन होते हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ दिल्ली में बैठक हुए, विज्ञान भवन में बैठक हुए और उसमें काफी इश्यूज है जो मैंने आपके सामने में रखा। सारे के सारे इश्यूज उसी दौरान हर स्टेट, मैं अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा मगर मैं स्टेट का नाम जरूर बताना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश से आए, आप सुनने का क्षमता रखेंगे तो मैं तो, आप लोगों ने इतना सवाल किया, मुझे तो लगता है कि कम से कम 3 घंटा मुझे बोलना चाहिए। इतना आप लोगों ने गलत धारणा यहाँ में फैलाया है सर। आंध्र प्रदेश, असम से, बिहार में सुन्नी वाले आए, दिल्ली का, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का शिया और उत्तर प्रदेश सुन्नी दोनों इस बैठक में। আৰু এনেদৰে মুছলমান মহিলাক ৱাকাফ বোৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তাৱকে ধৰি কেইবাটা প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে নতুন বিধেয়কত আৰু যাক লৈ বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছে বৰ্তমান সদনৰ মজিয়াত। আৰু এই বিষয়ত আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিবলৈ নিউজ ৰুমত থকা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। পাৰ্থ, এই বিতৰ্কিত এই বিষয় এটা যি নেকি নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছে, প্ৰায় 40টাকৈ সংশোধনী বা প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে, এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। জয়ন্ত, আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বিলখন উত্থাপন কৰিলে, বিধেয়কখন লোকসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিলে। মূলতঃ এই বিধেয়কখন আইনলৈ যদি ৰূপান্তৰিত হয় তেতিয়া ৱাকফ বোৰ্ডৰ কিছু ক্ষমতা কৰ্তন হ'ব। আৰু মন কৰিব, ৱাকফ বোৰ্ডৰ আজিৰ তাৰিখত যি ভূমি, সেই ভূমিৰ যদি আমি পৰিমাণ কেলকুলেট কৰোঁ, তেওঁলোকৰ হাতত আজিৰ তাৰিখত 1.2 লাখ কোটি টকাৰ ভূমি আছে, 1.2 লাখ কোটি টকা। আৰু তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষৰ 3rd লাৰ্জেষ্ট লেণ্ড ডোনাৰ, তৃতীয় বৃহৎ ভূমি থকা সেইটো হৈছে এটা সংগঠন বুলি ক'ব পাৰি। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছু সংশোধনী, আপুনি কৈছে 40টা, সৰ্বমুঠ 44টা সংশোধনী পুৰণি ৱাকফ বোৰ্ড এখনত সৰ্বমুঠ 44টা সংশোধনী আনিব বিচাৰিছে এই নতুন বিধেয়কখনৰ যোগেদি। আৰু সংশোধনীকেইটাৰ অন্যতম সংশোধনী এটা হৈছে চৰকাৰী ভূমি ৱাকফ বোৰ্ডে চৰকাৰী ভূমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব, এটা সংশোধনী। দ্বিতীয়টো হৈছে যদি ৱাকফ বোৰ্ডে গ্ৰহণ কৰা ভূমিত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হয় তেতিয়া সেই বিতৰ্কৰ উপশম ঘটাব বা সেই বিতৰ্কৰ আৰ্বিটাৰ হিচাপে নিযুক্ত হ'ব
জিলাখনৰ উপায়ুক্তগৰাকী পূৰ্বতে ৱৰ্ক অফ ট্ৰাইব্যুনেল আছিলে ৱৰ্ক অফ ট্ৰাইব্যুনেলৰ ব্যৱস্থাটো আঁতৰাই দিয়া হৈছে দুখনকৈ ৱৰ্ক অফ বোৰ্ড থাকে এখন হৈছে কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ ৱৰ্ক অফ কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিচালিত হয় আনখন হৈছে ৰাজ্যসমূহৰ ৱৰ্ক অফ বোৰ্ড ভাৰতবৰ্ষত সৰ্বমুঠ 30খনমান তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৱৰ্ক অফ বোৰ্ড আছে উদাহৰণস্বৰূপে অসম ৱৰ্ক অফ বোৰ্ড তামিলনাডু ৱৰ্ক অফ বোৰ্ড ইত্যাদি সেই ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডসমূহত এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো নিয়ম সেই নিয়ম অনুসৰি মহিলা সদস্য নাছিলে মহিলা সদস্য বাধ্যতামূলকভাৱে দুগৰাকী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব এগৰাকী অনা মুছলিম সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব সেই নতুন নিয়মখিনি অনা হৈছে আৰু মূলতঃ ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডৰ এই নতুন যি বিধেয়ক এই বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ পিছত ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডে যধে মধে বা যিকোনো মাটিয়ে তেওঁলোকৰ মাটি বুলি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই আইনৰ যোগেদি বিশেষকৈ মুছলমান মহিলাসকলৰ যি মাটি বা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে তেওঁলোকে যি মাটি লাভ কৰিব সেই মাটি সুৰক্ষা কৰাৰ এক উদ্দেশ্য আগত ৰখা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'ব বিচাৰিছে গতিকে এই ধৰণৰ কিছু আইন নতুন নিয়ম আনিব বিচৰা হৈছে ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডৰ যোগেদি কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ বিৰোধী দলসমূহে কৰিছে বিৰোধী দলসমূহে কৈছে এইখন বৈষম্যমূলক বিধেয়ক কেচি বেণুগোপালে কৈছে ড্ৰেকনিয়ান বুলি অখিলেশ সিং যাদৱে কৈছে মুছলমানৰ এক ব্যৱস্থাত অনা মুছলমান সদস্যৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণ কি এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কিন্তু চৰকাৰে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এই আইনখনৰ যোগেদি ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডৰ পৰিচালনাত কিছু সালসলনি ঘটাবলৈ যাতে তেওঁলোকে যিকোনো মুহূৰ্তলৈ যিকোনো মাটিয়ে অধিগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে জয়ন্ত নিশ্চয় ইতিমধ্যে এই যিটো বিধেয়ক এই বিধেয়ক বা যি প্ৰস্তাৱ এই প্ৰস্তাৱক কিন্তু অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি অভিহিত কৰিছে তেওঁলোকে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি অভিহিত কৰিছে অনাগত সময়ত স্বাভাৱিকতে তেওঁলোক অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ড আইনৰ ওচৰলৈ তেওঁলোক যাব পাৰিব ৱৰ্ক অফ বোৰ্ড হৈছে ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডৰ সমগ্ৰ কনচেপ্টটো হৈছে মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ কিবা কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ যি মাটি সম্পত্তিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই মাটি সম্পত্তি যিসকল লোকে ডনেট কৰে দান কৰে সেই দান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক পৰিচালনা কৰিবলৈ মূলতঃ ৱৰ্ক অফ বোৰ্ড সকলো ৰাজ্যতে সেই ৱৰ্ক অফ বোৰ্ড আছে আৰু ৱৰ্ক অফ বোৰ্ড পৰিচালনা কৰিবলৈ 1995 চনত এক আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল কিন্তু সেই আইনত এই মুহূৰ্তত সংশোধনীৰ উপলব্ধি কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংশোধনী বিধেয়কখন আনিছে আৰু এটা কথা ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডৰ যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তি বিশেষকৈ বিধৱা বিবাহ বিচ্ছেদিত আৰু অৰফান লোকসকলৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰো পোষকতা এই নতুন আইনখনে কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মই ক'লোৱেই মহিলাসকলে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিসমূহ উদাহৰণস্বৰূপে এগৰাকী মহিলাই যদি তেওঁৰ পিতৃৰ পৰা মাটি এডোখৰ পাইছে সেই মাটিডোখৰ মহিলাগৰাকীৰ অনিচ্ছাকৃতভাৱে ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডত যদি কোনোবাই হেণ্ডঅভাৰ কৰে কোনোবাই দান দিয়ে সেয়া গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব নতুন আইনৰ যোগেদি আৰু যিকোনো ধৰণৰ বিবাদ বা বিতৰ্ক ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডক মাটি দান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ বিতৰ্কৰ সমাধান কৰিব বা মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে সেই বিতৰ্কটো সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ডিচিগৰাকীয়ে পূৰ্বতে ৱৰ্ক অফ ট্ৰাইব্যুনেল আছিলে এতিয়া উপায়ুক্তগৰাকীক সেই সুযোগ বা সেই ক্ষমতা দিয়া হৈছে 44টা সংশোধনী মই কৈছোৱেই ছেকশ্যন 40 এবলিছ কৰাৰ কথা কৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন সংশোধনী আইনখনৰ যোগেদি আৰু ছেকশ্যন 40ত চৰকাৰী ভূমি ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডক দান দিয়াৰ এক প্ৰসংগ উল্লেখ আছে গতিকে সেই ধৰণৰ কিছু বিশেষকৈ ৱৰ্ক অফ বোৰ্ডৰ যি মাটিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ কৰ্তনৰ এক পৰিকল্পনা চৰকাৰে কৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে পূৰ্বতে বা এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত যিখিনি মাটি আছিল সেইখিনিও পৰীক্ষা কৰা হ'ব বা অনাগত সময়ত তেওঁলোকে যিসমূহ মাটি গ্ৰহণ কৰিব সেই মাটিসমূহো সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত দাতাজনে দিব বিচাৰিছে নাই বিচৰা সকলো চোৱাৰ পিছত যিজন দাতা মাটি ডনেট কৰিব তেওঁৰ ভগ্নী ভাতৃসকলৰ NOC আছেনে নাই সকলো চাই সকলো পৰীক্ষা কৰি সেই মাটি ডনেট কৰাৰ এক ব্যৱস্থাৰ সূচনা এই নতুন সংশোধনী বিধেয়কখনে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'লে কৰিব বুলি শাসক দলে দাবী কৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো পাৰ্থ আপুনি এইখিনি সবিস্তাৰে তথ্য জনাইছে আৰু বৰ্তমান বিধেয়ক উত্থাপন কৰি আছে সদনৰ মজিয়াত কিৰেণ ৰিজিজুৱে Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आधा मिनट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे मुझे यकीन है मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं
आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। This provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is directly an attack on the faith and freedom of religion. Directly. Sir, that we are talking about you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jain. Next you will go for Parsi. Next you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. There in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of Indian? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. सर, मैं सिलचर से आता हूँ। सिलचर जाने का आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 से 1947 से 2018 तक मेघालय होते हुए जो NH6 है, ये 6 सिंगल लाइन था, 348 किलोमीटर। मोदी जी आने का बाद 14 में पहला दफे नितिन जी का नेतृत्व में ये NH6 डबल लाइनिंग हुआ। पहले हमारा सिलचर जाने के लिए 340 किलोमीटर में हमारा 3 दिन लगा करता था, मगर 14 का बाद हम लोग 6 घंटा 7 घंटा के अंदर जा सकता हूं। और सिलचर यानी सिलचर सिर्फ नहीं है, ये गेटवे ऑफ मिजोरम, गेटवे ऑफ त्रिपुरा, गेटवे ऑफ मणिपुर, तीनों स्टेट है। सिलचर होते हुए गाड़ी गुजरती है। मगर आपका जानकारी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में हिली ट्रैक्स होता है, और ये हिली ट्रैक्स में हमारा नॉर्थ ईस्ट का मेघालय में ज्यादा बरसात भी होता है, लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल अभी ये रास्ता बिगड़ गया यानी बोल सकता हूं खत्म ही हो गया। जुआई से सिलचर तक अभी जाने के लिए 2 दिन लगता है, छोटा गाड़ी जा नहीं पाता है। इसमें से कुछ NHIDCL, कुछ NHAI मेंटेन करता है। मैं आपका माध्यम से गुजारिश करता हूं नितिन जी से, क्योंकि वो पूरा भारत का रास्ता का रूपकार है, कि उसने कृपा करके ये रास्ता को जल्दी मेरामत करके देने का कोशिश करे। আৰু ইয়াৰ লোকসভাত শিলচৰ জোৱাই সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে শিলচৰৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। পথটো দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বেই নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক অনুৰোধ জনালে সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। সোনাপুৰ দিগাৰু হাটগাঁও সংযোগী পথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, পাহাৰৰ মাটি খহি পৰাত পথটোৰে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। অবৈধভাৱে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পাহাৰ খনন কৰাৰ ফলত ভূমিস্খলন সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ভূমিস্খলনৰ পিছতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী সোমোৱাত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে কেইবাটাও অঞ্চল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে প্ৰশাসনৰ লোক। বৰ্তমান পথ মুকলিৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। কলে যাব আপুনি? মই ক্ষেত্ৰী ডেইলি এফালদি আপ ডাউন কৰোঁ। চ' আজিতো যি দেখিলোঁ বাপৰে, যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। অবভিয়াছলি। চ' যিহেতু এইটো ৰাস্তা দিয়ে যাওঁ সদায় আপ ডাউন, চ' এইটো ৰাস্তা ব্লক মানে এতিয়া পূৰা ঘূৰি যোৱাটোতো আৰু এটা ঝামেলা। মহানগৰীত ইলেক্ট্ৰিক বাছত অগ্নিকাণ্ড, আদাবাৰীৰ ASTC বাছত জুইৰ সূত্ৰপাত। মাছখোৱাৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখী আছিল বাছখন। হৰাইঘাট পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত ভয়ংকৰ ঘটনা। বাছত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ পাছতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।